Requesting Vinod Rai, if you can please come up and sit besides our scorer. That will be a great honor for us. RCC Odisha 12th man and extra man, please come and sit besides the scorer. Krishna Satpute and Avinash, the opening pair. Manje is the bowler to Krishna Satpute. Here comes the first delivery from the Sal River end. Bull Bobby on the ground. Once again a helicopter kind of a shot, but the ball is grounded straight down the ground on the carpet. And the ball races away to the boundary. The very first ball, beautifully timed. Bring an old school sound to the new shit. So bowling within the radar of Krishna Satpute is inviting trouble for the fielding side for sure. Manje continues and this time he's going in the deep square leg region. No fielder there. The ball once again races to the boundary. Back-to-back boundaries coming up here from Krishna Satpute. Sure. Manje continues and this time he's going in the deep square leg region. No fielder there. The ball once again races to the boundary. Back-to-back. Krishna Satpute, the king of tennis ball in Goa, Apali Kalangudkar. Once again, right in the block hole, but nicely play coming down the track to the ball on the half in play. A hat trick of boundaries from Krishna Satpute. Apali Kalangudkar. Once again, right in the block hole, but nicely Krishna Satpute is unleashing the power of a hat trick of boundaries from Rise of Goa. And what a way to bet every ball that he is facing, showing to the boundary in the form of 4 runs. So 3 balls gone, 12 runs on the scoreboard. Shuffling across, but well bowled this time by Manje. Wicket keeper is outstanding, but overthrow once again gets Satpute on the striking position. It was just a single, but that overthrow allowed the batsman to convert single into 2. Good running between the wickets to take the score up to 14. In the 4 balls, it was a dot ball, but due to a little shuffling there on the fielding side and overthrowing allowed them 2 comfortable singles, couple of runs. So 5th delivery from Manje. Satpute coming down the track, and what a hit this is! And what a hit this is, nice and straight, up and over. Gets enough of the bat on that one to take the ball sailing the area for the maximum to take the score up to 20. The score moves up to 20. What a cracking shot, ferociously hit. The timing was perfect. Exquisite timing from Satpute. Shot of a land delivery once again, playing square. There is the field and takes it. Satpute is out. The prize wicket here coming up for RCC Odisha. And Manje striking 20 for 1 in the very first over. So 20 for 1 in the very first over. And Krishna Satpute is out after contributing 20 runs. 3 boundaries back to back, a hat trick of boundaries, and then 2 runs. And 1 sixer, so 20 runs contribution and the 20 runs on the board. Wanted to play, but straight away plays straight to the fielder in the short gully region. Little upset that he should have hit it more harder, which could have beaten the short fielder to get the boundary. So after the completion of 1 over, score is 20 for 1. The prize wicket here for RCC Odisha. Tarun is the new bowler on the bowling mark to begin the second over. 20 for 1. Avinash, left-hander, gains the striking position. 70-70 is the symbol on the t-shirt of Krishna Satpute. One of the outstanding batter when it comes to the tennis ball cricket tournament in India. The one name
which tops the list is Krishna Satpute, Ijaz Qureshi, another big names. Not to forget from Goa, Lalla Yadav and Manoj Narvekar. The big name in tennis, cricket. Beautifully bowled, excellent line. The ball keeping low, not coming to the expectation of Avinash. And the very first ball is a dot ball, score remains on the same, unshaken on 20 after 1.1 over. And Tarun is known as a good bowler and a Dale Steyn of RCC, Odisha, Kautiachi, Govachi. Look at the length, but this time nicely picked up. Read him much earlier and a swing of the bat from Avinash. Bang, she goes. Look at the land, but this Big time names, nicely this is, picked up. Vijay Paule, Afzal Sheikh, Pankaj Jadhav, Yogesh Pawar. Yogesh Pawar, beg your pardon. Yogesh Pawar played in the morning. And Sultan Khan, the Sultan Mirza of Dheeraj 11 of Pune. Tarun continues to Avinash coming down the leg on beautiful delivery appeal for the leg before the ball is taken on the full toss. Good shout, confident appeal. Everyone is going up. Umpire says no doubt, but signals a leg by. May have marginally missed, so maybe the benefit of doubt goes to the batsman. So taking that into consideration, Sunil denied the appeal. Yogesh Penkar against the striking position. He's a new man. Fresh leg. Change of field in there by Tarun. And score moves up to 27 after that. Loud appeal. Right on the leg of Avinash. The pace was brilliant. 125 kilometers an hour. And this is the kind of pace that Tarun normally keeps and generates the pace. Speedster. Once again beaten the pace. Maybe the width is involved. He was leaning to reach the ball. That's the reason why a stretch of arms from umpire Sunil. Yogesh Penkar, after the departure of Krishna Satpute, he's in at number 3. That is one down batsman. Things will not be easy here as it was against Chennai for RCC Odisha, because they are up against a very strong team from Maharashtra. And Dheeraj 11, when it comes to tennis ball, they rule. Oh, just a bit of a bad on that one to get off the mark for Yogesh Penkar. He's get off the mark with the single to take the score up to 29. And this is the second over in progress and the power play overs, wherein the batsman can make the most fancy his chances in these particular power play overs. Once again, wishing everyone very good evening, good morning, good evening, and to all my listeners on the YouTube, you're watching the beautiful tournament of UV Rangers Asnora. And today is the day of all India teams participating. Goa Super League 2017 and a bounty prize of 1,11,111. Bang! No, this time the ball is brilliantly bowled by Tarun, and the umpire says it's an over. End of 2 overs, 29 for 1. धन्यवाद. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती 29 धावा, 14.50 ची सरासरी इकडे आतापर्यंत गाठलेली आहे. धीरज 11
पुणेनी पाहूया अजूनही 4 षटकांचा खेळ येणं बाकी आहे. जर या सरासरीने जरी केलं तरी एका चांगल्या धावसंख्येपर्यंत नक्कीच पोहोचू शकता. पाहूया अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. योगेश पेनकर बद्दल नेहमीच भरभरून बोलावं असं वाटतंय. फक्त क्रिकेटकडे लक्ष न देता शिक्षणाकडेही ज्यांनी लक्ष देत ॲज अ केमिकल इंजिनियर म्हणून जो काम सध्या करतोय असा हा क्रिकेट प्लस एज्युकेट असा हा खेळाडू, नक्कीच त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी. योगेश पेनकर ज्याचा आताच थोड्या वेळा दिवसापूर्वी एक सत्कार झाला होता आणि खरोखर त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी. 29 धावा फलकावर आहेत. पाहिजे योगेश पेनकर एक सक्सेसफुल कर्णधार म्हणून ज्याची ओळख आहे, तर म्हणजे पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इकडे मात्र चेंज ऑफ पेस, मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात पॉवर प्ले संपुष्टात आल्यानंतर मात्र एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतं. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 30 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. 30 धावा फलकावर आहेत. याआधी 57 धावा या काढून दिल्या नव्हत्या या RCC ओरिसा संघाने. आपण पाहिलं असेल जर चेन्नई संघासमोर जेव्हा त्यांचा सामना होता, धावसंख्या आतापर्यंत फलकावर लागतंय ती 30 धावा. एक चांगला सामना आणि एक चांगल्या सामन्यात मात्र प्रेक्षकांचं मनोरंजन खूप होणार आहे, यात काही वाद नाही. पुन्हा एकदा म्हणजे थोडंसं क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेताना डावखुरा आणि उजवा असे दोन्ही हाताचे फलंदाज मैदानावर असल्याकारणाने, खेळपट्टीवर असल्याकारणाने इकडे मात्र दरवेळी क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करावे लागतात आणि त्यामुळे कॉन्सन्ट्रेशन थोडंसं कधी कधी खालावलंही जातं. पाहूया याचा किती फायदा फलंदाज मात्र उचलतोय. अविनाश रामगुडे ज्यांनी 5च्या सामन्यात मात्र धुवाधार फलंदाजी केली होती, म्हणजे पुन्हा एकदा तयार. इकडे मात्र चांगला चेंडू, दोन्ही पायांच्या मधून चेंडू जातोय, थोडक्यात वाचला की काय असं चित्र मात्र समोर येतंय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. सरळ बुंद्यात टाकलेला चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न मात्र होतोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. म्हणजे काय तर चेंडू जातोय पायामधून. खूपच चांगली गोलंदाजी म्हणजेची. RCC ओडिशा मात्र आपल्या नावाप्रमाणे काम करतंय. पुन्हा एकदा म्हणजे टू अविनाश. इकडे मात्र खराब चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा. चेंडू मात्र जाईल सीमा पार. षटकार आमच्या चंदू सरांच्या स्टाईलमध्ये. मात्र खराब चेंडू, त्याचा पुरेपूर फायदा. चेंडू मात्र जाईल धावसंख्या फलकावर लागते ती मात्र आता 36 धावा. या षटकाराने मात्र अविनाश रामगुडेचा जो आत्मविश्वास आहे तो नक्कीच वाढला असेल, यात काही डाऊट नाही. इकडे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आडवा पट्टा ज्याला म्हटलं जातं ऑन साईडला जास्तीत जास्त खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र तो प्रयत्न एवढा चांगला नाही. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. 2 चेंडू अजूनही या षटकातील येणं बाकी. धावसंख्या फलकावर आहे आतापर्यंत 36 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज, पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात आणि गडी बाद. यावेळी मात्र म्हणजे हा दुसरा गडी बाद करण्यात यश प्राप्त करतोय. तर आता मात्र नवीन फलंदाज येतोय पंकज जाधव, ज्यांनी 5च्या सामन्यात एक चांगली फलंदाजी केली होती. षटकारांचा बादशाह बूम बूम माटे म्हणून ज्याची ओळख आहे पंकज जाधव, हा मात्र फलंदाजीसाठी येतोय. योगेश पेनकर आणि पाहूया पंकज जाधव आपल्या संघाला अजूनही किती धावा जमवून देतोय, कारण या षटकातील अजूनही शेवटचा चेंडू येणे बाकी आहे. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. सरासरी जवळजवळ 12ची आणि 12ची सरासरी ही चांगली समजली जात आहे, कारण या मैदानावर जर तुम्ही 70च्या वरती धावा जर बनवल्या तर त्या नक्कीच मोठ्या धावा समजल्या जातील. पाहूया पुन्हा एकदा म्हणजे टू पंकज जाधव. तर क्षेत्ररक्षणात पुन्हा थोडासा बदल करताना दिसत आहेत. पाहूया गोलंदाज म्हणजे पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आपल्या बॉलिंग मार्ककडून तयार होताना समोर जाते पंकज.
फुलटॉस बॉल आणि चेंडू सरळ हातात. कॅच प्रॅक्टिस. तयार होताना समोर येतं पंकज. फुलटॉस बॉल आणि चेंडू सरळ हातात. कॅच पंकज जाधव प्रॅक्टिस. गोल्डन डक. मला वाटतं फुलटॉस चेंडू होता त्याचा पुरेपूर फायदा उचलायला हवा होता. मात्र धावसंख्या फलकावर आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा. 3 ओवर की समाप्ति 36 रन और अभी भी 3 ओवर का खेलाना बाकी. क्या यहाँ पे ये धीरज 11 की टीम के ऊपर अब संकट के काले बादल छा चुके हैं? क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे आरसीसी ओडिशा की टीम ने. बहुत ही बढ़िया वापसी, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 28 रन और अब स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 36 और विकेट जा चुके हैं 3. पहले आउट होने वाले खिलाड़ी कृष्णा सातपुते जिन्होंने 6 गेंदों में 20 रन बनाए. उसके बाद अविनाश रामगुड़े जिन्होंने 12 रन बनाए थे. योगेश पेनकर अभी भी मैदान में. पंकज जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला वो मैदान से बाहर आते हुए. नए बल्लेबाज आते हुए नैन मोंगिया. देखना है मोंगिया क्या करेंगे, लेकिन उनके सामने तो गेंदबाजी के लिए दया शंकर. तो देखना है पिछले मैच में तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी बल्लेबाज के सामने. अब देखना है क्या योगेश पेनकर उनका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि योगेश पेनकर इन्हें कूल माइंड कहा जाता है. और देखना है क्या करेंगे. पहली गेंद उठा दिया है और ये 6 रन. कहा जाता है वो देखना है क्या करेंगे. इनकी एक पोस्ट आई है एफबी पे जाए और इनकी पोस्ट आई है. उठा दिया. जवाब पोस्ट है इनकी. योगेश पेनकर फिर से उठाने की कोशिश. हवा में गेंद और ये बैक टू बैक सिक्सर. कहा जाता है वो देखना है क्या करेंगे. मुझे लगता है ये केमिकल इंजीनियर है तो केमिकल रिएक्शन बना रहे हैं. गेंद उठा दिया और ये और दया ये शंकर पे 6 कोई दया रन. नहीं दिखा रहे. गेंद और बल्ले में अच्छी केमिस्ट्री और ये बैक टू बैक के तीसरा होगा नहीं. इस बार दया शंकर ने कोई दया नहीं दिखाई और ये विकेट का बटन. और बल्ले में अच्छी केमिस्ट्री और ये बैक टू बैक के तीसरा होगा नहीं. इस बार दया शंकर ने कोई दया नहीं दिखाई. अब नए बल्लेबाज जाते हुए हैं अक्षय. अब तक का स्कोर 48. योगेश पेनकर आउट होने वाले बल्लेबाज. ये चौथा ओवर प्रगति पथ पे है. काफी बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि जब आपको 2 सिक्सर लगे आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया है, उसके बाद विकेट लेना ये अपनी टीम के लिए एक अच्छी बात होती है और यहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी. अब देखना है नीलेश. नीलेश की बात की जाए तो नीलेश भी विदेश जाने वाले खिलाड़ियों में एक कंसिस्टेंसी खिलाड़ी है जिनकी बल्लेबाजी काफ़ी बढ़िया होती है. हमेशा मैंने उनकी बल्लेबाजी देखी है, चाहे वो कतार हो चाहे वो शारजा हो, हर जगह पे उनकी बल्लेबाजी देखने का मौका मिला है मुझे भी. तो देखना है इस मैच में वो क्या कर पाएंगे. फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए दया शंकर. राइट आर्म राउंड विकेट इस बार नीलेश के लिए. पहली गेंद उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं. डॉट बॉल और यहाँ से बाहर से आवाज आ रही है अपना डाल. और कुछ अपना में कुछ जादू होता है, उन्होंने बता दिया, वो डाल दिया और डॉट बॉल. और अपना सपना डॉट डॉट है. अभी इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश. फील्डर वहां पे मौजूद है. पहला रन तेजी के साथ भागे लेकिन एक पे ही संतुष्ट. 49 ऑन बोर्ड, 49 रन. अब आए नए बल्लेबाज अक्षय जो पहली गेंद को फेस करेंगे इस इनिंग में. चौथे ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी. औसत की बात की जाए तो लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास. और अब देखना है आखिरी गेंद
ये आखिरी गेंद पे क्या करेंगे, चौथी ओवर की आखिरी गेंद। दयाशंकर आखिरी गेंद लेके तैयार। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, हवा में गेंद जरूर है और ये कैच, लाजवाब कैच और ये विकेट का पतन। 4 ओवर की समाप्ति 49 और अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी। और जैसे ही 5वां ओवर आएगा हमारे साथी कमेंटेटर तुषार जी आपके साथ हो रही है। Thank you, Chirag. 4 overs gone, 49 for the loss of 5 wickets. So half the side back in the pavilion. Scoring almost 12 runs per over. Final 12 deliveries in the kitty for the Dheeraj 11. They will be eyeing for a target of at least 80 to 85, 90 on the scoreboard. Nilesh on strike, facing Tarun. The penultimate over of the innings. Tarun the bowler. Tarun means young, and let's see how this young blood can perform for the Orissa team. Nilesh on strike. Standing deep in the crease. Oh, it was a full delivery. Outside the leg stump, white signal by the umpire. If he had connected the ball, it would have been sailing into the crowd. So score moved on to 50. So 50 comes up for the Dheeraj 11. 4 overs already completed. Both the players from Gujarat, not Gujarat Lions, but from Gujarat. Oh, what a swing of the bat, and where she goes back into the crowd. He absolutely smoked it. Timed it to perfection, right from the meat of the bat, and went a long way into the crowd. Oh, what a swing of the bat, and where she goes back into the crowd. So Youngblood already facing some pressure. Score moves on to 56. Again, swing of the bat, beaten, loud appeal for a caught behind, up goes the finger. So good comeback by the bowler Tarun. Great concentration shown by the bowler after, even though he was spanked for a towering 6 over the deep mid-wicket region, came back strongly to dismiss the batsman. Nadim taking a wonderful catch because it was his own mobile. Sandesh, the new batsman replacing Nilesh. Sandesh has just another 10 deliveries to face. Tarun charged up with that wicket. But this time Sandesh swings the ball into the crowd. It went sailing deep in the throat of the crowd this time. The ball in the bushes. Tarun charged up with that wicket. It's difficult to find that ball. You have to play with a replacement ball But for this sure. time Sandesh swings the ball into the crowd. What a shot. He just walked in and dispatched the ball way back into the crowd. It looks like he has come at the crease, being set in the pavilion itself. Score moves on to 62. This time, fine tickle running down the leg side. 2 is the call. And a sudden boundary. Another floppy piece of fielding on the fine leg boundary region by the fielder. This time, fine Catch tickle dropped by the keeper. And then a running boundary down the missed leg side. by the fielder. Manji, 2 is the call. captain of the team. And a sudden boundary.
I think they are waiting for that ball to come back. This time, again, straight to the fielder. Again, a strong comeback by the bowler. Every time he's being hit for a 6, he comes and picks up a wicket of the very next ball. So 2 boundary, 2 sixes and 2 wickets. This time, You should be again, saying that it's a straight to the 50-50 performance fielder. by the bowler. Leaked 12 runs but picked 2 wickets. Score moves on to 66. Final ball of the penultimate over. Vijay, the batsman. Vijay Paule. Walking down the crease. A dot ball to finish off the penultimate over. 5 overs gone. It's 66. 13 runs per over they are going at the moment. Final 6 deliveries in the kitty. They will be eyeing for at least 25 to 30 runs from the 6 balls. A solid comeback by the Orissa team, one must say, when Krishna Satpute was going all gun blazing in the very first over, which leaked 20 runs. Tomorrow will be the day of quarterfinals, and then a grand Sunday, which will bring the 2 semi-finals and a big grand finale, which is supported with a prize money of 1,11,111 for the winners. Runners-up will cash in with 55,555. First ball of the penultimate over, into the crowd, flat 6. Will cash in with 55,555. It was a flat 6, flatted ever. It went right parallel to the ground. Jignesh, the bowler. What a First batsman, ball of the Jignesh. penultimate over. This time left Into alone the outside the offside, right field by the crowd. umpire. Flat 6. So make it 7 from first ball. Make it 73. This time beaten by the pace. Good change of pace by the bowlers. Outthinking the batsman. Batsman standing deep in the crease. Trying to heave the ball over the deep mid wicket. Bowler's name please. Ajit. The bowler. This time in his arc. And send it way back into the Banjara Basti. Will cash in with Second 6 of the Ajit, over. the bowler. This time, The Banjara Basti in his is arc, just shaken by the shot. and sent The ball has been top edged. Keeper underneath. Safely taken. So far we have seen that when the bowler is being hit for a 6, he comes back and picks up a wicket. Safely taken. It has been done on this occasion too. And the score has moved on to 79. Snehal Patel, the new batsman, but he will be at the non-striker's end at the batsman crossed over when the catch was being taken. Oh, what a switch hit attempted, but falling short of the short third man region fielder. Just a single score moves on to 80. Final ball. Will it be 86 on the scoreboard? Will it be 86 or will it be 84? It's out, caught behind, so it stays on 80. And 81 is the target set for the Orissa team to move into the quarterfinals. It's out, caught behind, So again it will come stays back. on 80. 80 is the target. 80 is the score on the scoreboard. 81 is the target from 6 overs.
Manji picking up 3 crucial wickets, that and the major breakthrough of Krishna Satpute. Manjit leading the bowling attack from the front. So they will be all planning for the chase and have to execute the plan to perfection. Aggie has done a fabulous job along with Samir as the umpires. So with the change in innings, there is always change in commentary. It's back again to Nadeem Ahmed. Thank you, Tushar. And once again, let me remind you guys that this is Goa Super League 2017, a tournament organized by UV Rangers of Asnora on this beautiful ground of Mulgaon Cricket Ground, Asurabad is Goa. The team battling in the final match is RCC Odisha Kautiachi versus Dheeraj 11 from Pune. 81 is the target to achieve in win for RCC Odisha. So after the Pepsi circle in the meeting and a game plan strategy from RCC Odisha, and they are up with confidence to take the bowlers head on to get to the target of 81. The lineup for Dheeraj 11 goes as follows: Sandesh Pate, Yogesh Penkar, Krishna Satpute, Pankaj Jadhav, Afzal Sheikh, Vijay Pawle, Sultan Khan, Jignesh Patel, Nilesh Mangia, Avinash Ramgaude, Snehal Patel. Last but not the least, Akshay Katmode joins the line of batting, and coach name is Arif Khan. Manager is Tanveer Sahab. The lineup for RCC Odisha goes as follows: Manjay, Indra, Saroj, Jagat, Bhoi, Ajit, Tarun, Davya Singh, Binod Rai, Bablu, Saroj and David are the opening pair for RCC to chase the target of 81 in allotted 6 overs. Well, good evening to my listeners. You're listening to Nadeem Ahmed. The final match of the Friday, and tomorrow will be another day. The clashing of quarterfinals and the big finals will be on Sunday, followed by 2 semi-finals. So 13 runs every over is the equation. Runs required every over, and they have to plan and they have to play accordingly if they want to get to the target of 81 against strong Dheeraj 11. Swapnesh on the bowling mark. Here comes the first delivery and boom! The ball is going towering. One bounce but not going across the boundary rope, wherein everyone thought that the ball would go all the way for a sixer, but make no mistake, the ball remained on the ground. The height was more than the distance. It was more vertical than horizontal, wherein when the batsman hits it horizontal, the ball goes to the maximum. But it was a good striking.
Beg your pardon, Jignesh is a bowler, and this time right bang on the target. And Jigu bowls that kind of a good line and length. He normally maintains that good areas of the bowling. Sometimes the ball comes with pace, sometimes a slow one. Look at that beauty. The length did the trick this time, and well kept by Penkar. Behind the stumps, and he too wears the gloves. So this is new trend coming in the tennis ball. The wicket keeper wearing the leather ball gloves. Oh, nicely played, but didn't quite time the ball, but still will get a single, though straight to the square leg field where square leg umpire Sunil is positioned. So this is brilliant bowling from Jignesh. And just trying to mount the pressure on the RCC Odisha. Good looking shot, this time it's clean hit. The ball will sail miles out of here. And what a shot that is. What it was, clean hitting. And Saroj is such a good timer of the ball. And he is definitely a hope for RCC Odisha. The longer he stays on the crease, the better it is for RCC Odisha. He will fire big ones for sure. No matter who's the bowler, no matter where he bowls, no matter what kind of a pace that he generates, no matter the variation, but he will pick up the length very easily because he got good eye-hand coordination. Jiggu continues to Saroj. Bang, another one, but this time one bounce to the fielder. Straight down the ground to long on. That will be just a single after that. Outstanding shot out of the ground for sixer. And that brings the end of first over. After the completion of first over, score is 9 when the requirement is 13. So they're short of 4 runs. Well, they have to make up in the next over. And now next over, the equation is slightly mounting to 13.5 or 14 runs. They have to really play some good cricket, RCC Odisha, if they have to stay in this tournament. And these 2 overs of the power play will be the key factor. Because normally only 2 fielders outside the 30-yard circle and rest everyone is within the circle where the batsman can make his chances fancy and play some big shot. Anything uppish, anything in the gap, the ball will race away to the boundary. And that is the advantage this batsman needs to grab and take in the first and second over. But what a brilliant over from Jigga. Jignesh is just giving away 9 runs. Snehal Patel on the bowling mark. Red and black t-shirt and red trousers with white shoes. Slightly adjusting the field on the deep mid-wicket region. Short mid-wicket fielder. The deep square leg fielder. Here comes the first delivery. What a shot this is. But the fielder tried his best. But the ball has gone all the way for a sixer. Good hit. And Saroj once again firing a big one, a maximum. What a hitting this is from Saroj. He needs to continue. Keep going in a similar manner. I think he has heard him right in the crowd. Back-to-back sixes from Saroj to Patel. Let's go quickly moving up to 21. And exactly now 60 runs needed for RCC Odisha to get to the target of 81. His score is already 21. So this is the kind of a batting what is expected. And Saroj is not disappointing the team, not disappointing the audience watching him. And thousands of audience watching on YouTube. Thanks to tenniscricket.in. Oh, this is much better delivery. Slightly overpaced. Excellent fielding there by Yogesh Penkar. Though it was a little fumble there from Krishna Satpute. But good backup. Matia is the wicket keeper. He's a big fella.
If not his hand, his body can stop the ball for sure behind the stumps. Here comes Patel. Once again, swing of the bat. Didn't quite time the ball. Miscued it. There finds a fielder. Oh, the dangerous batsman meets his fate and he's disappointed. The hopes have been just shattered off for RCC Odisha. And this is the wicket what Dheeraj 11 were looking for, and they gets it in the second over. No matter that he has given 2 sixes, but he has picked up a wicket as well. Snehal Patel. Next batsman, Jagat Janni, not of PK, Jagat Bhoy of Odisha. So now Jagat and this batsman, David, bend it like Beckham. David and Jagat needs to take the team's total and keep the momentum as it was been given by Saroj to them. Snehal Patel providing the first breakthrough for Dheeraj 11. He continues to David. Swing of the bat, misses it, appeal for the caught behind, umpire says no. Much better delivery, and what a keep there by Pankaj Matu. He's a good batsman and a fantastic wicket keeper. Look at how easily he grabs the ball and standing so close to the pacer like Patel, which is not easy. Oh, this is Bhima! And collection from Pankaj, brilliant. Normally wicket keeper let the ball go, but Pankaj has held on to it. Chip Kylo, Fevicol say. Maybe a lot of Fevicols been on that clouses. Brilliant work from Pankaj. Swing and a miss. Oh, Mate this time just was slightly late on that stumping. If this was a stumping from Mate, would have been the best wicket keeper for sure. Because standing so close to the pace of 120, 125 and still holding on to the ball. Sometimes the beamer, sometimes the stumping. Brilliant from Mate. And it was a free hit, let me tell you. A stumping wouldn't have been out, but run out is considered. Another team from Goa which made a hat-trick of wins is Goa Police under the captainship of Dhondu Tudaskar. Dhondia is a good team to watch. Another team is Banganim. Another team is MLT Sanklim, which has made to the quarterfinals. So a lot of brilliant teams made it to the quarterfinals. Will be playing tomorrow here on this ground. And today is the game of All India. So all in all, I would like to congratulate the organizers for coming up with such a brilliant idea of organizing league matches tournament. UV Rangers Asnora, Rohan Salgaonkar, Muna Satodkar. Top page, and Painker will take it. So Jagat is out, wanted to play but miscued it completely. Anything up pitch, these fielders will grab it with both the hands. Special thanks to Samir Thakur and Suraj Parab, not to forget Agnello, Fernandez, Egi is also a part and parcel of this tournament, and a lot of contribution from Punka, that is Punaji Kalankudkar. So they are working as a unit and working as a team, come up with an outstanding format of tournament. UV Rangers Asnora, hats off to them. Because normally what happens is in tournaments, there are knockout matches. Just playing one match and getting defeated, you have to go back home. But in this tournament, Rinku Jackson, the far cousin of Michael Jackson, and far cousin of, far uncle of Janet Jackson. Shot of a land delivery, nicely swing of the bat connection. There's a fielder, will he get it? Yes, he does it. The catch has been brilliant and the catches wins matches. Back-to-back catches in the third over. Change in the commentary, I beg your pardon, I just got carried away. Over to versatile commentator Chirag, Meher.
धन्यवाद नदीमजी. इकडे मात्र चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. थोडं आधीच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं ज्या पद्धतीने स्नेहलनी गोलंदाजी केली, पहिल्या 2 चेंडूवर 2 षटकार, मात्र त्यानंतर चांगला कमबॅक आणि आता मात्र 60 धावा हव्यात आणि त्यामुळे जर ॲव्हरेज जर पाहिला, जर रिक्वायर्ड रन रेट पाहिलं तर 15च्या आसपास. मात्र जिग्नेश याच्याबद्दलही थोडं सांगेल पुढच्या चेंडूनंतर. पाहूया पुढचा चेंडू ऑन हॅट्रिक आणि इकडे मात्र हा चेंडू चांगल्या पद्धतीने घेऊन काढला जिग्नेश हाही गुजरातसाठी रणजी खेळलेला खेळाडू आहे, त्यामुळे हाही एक मोठा खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. जिग्नेश पटेल हाही एक मोठा खेळाडू. तर पाहूया गोलंदाज पुन्हा एकदा जिग्नेश, ज्या पद्धतीने चेंडू तो फिरवण्यासाठी खूपच प्रसिद्ध असा हा. तर पाहूया नवीन फलंदाज मात्र तयार होतोय. धावसंख्या फलकावर लागते ती मात्र 23. पुन्हा एकदा गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. इकडे मात्र हा चेंडू हलक्यात आणि घेऊन काढला. 1 धाव मात्र मिळेल. दोन्ही फलंदाज मात्र एकेरीवर काम भागवत आहेत. तसं मराठीत नेहमी म्हटलं जातं की दुधाची तहान ही ताकावर भागवली जाते, तसंच कदाचित षटकाराची तहान ही एकेरीवर भागवली जाते. धावसंख्या फलकावर लागतंय ती आतापर्यंत 24 धावा. 81 धावांचं आव्हान, 81 टू विन. तर पाहूया गोलंदाज. इकडे मात्र इंद्राला पुढचा चेंडू आहे, मात्र चांगला फटका लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत स्नेहल पटेल चेंडू घेईल उडवेल तोपर्यंत 1 धाव. नेहमी आपण पाहतो की जिग्नेश पटेलसाठी एक टॅगलाईन म्हटली जातं, खुशबू गुजरात की, असं म्हणून त्यांना ओळखलं जातं जास्तीत जास्त. असा हा जिग्नेश पटेल पुन्हा एकदा थोडासा क्षेत्ररक्षणात बदल करतोय. खूप मोठमोठे सितारे आपल्याला पाहायला मिळतात या GSL मध्ये. इकडे मात्र सुरेख फटका, चेंडू बराच कावेत आणि संदेशला मात्र कॅच प्रॅक्टिस, गडी बाद, आउट. डीजे गायब आहेत त्यामुळे म्युझिक तर तुम्हाला ऐकायला पाहायला मिळणार नाही. मात्र धावसंख्या फलकावर लागते ती आतापर्यंत 25 धावा. असं एकंदरीत वाटलं होतं 2 षटकामध्ये 21 धावा, 8 चेंडूत 21 धावा झाल्यानंतर असं वाटलं होतं की RCC ओडिशा संघ हा सामन्यात पुनरागमन करेल. मात्र त्यानंतर जी परिस्थिती बदलली, गडी बाद झाले, त्यानंतर मात्र आता ड्रायव्हिंग सीटवर जाऊन पोचलाय तो धीरज 11 आणि बॅकफुटवर जाऊन पोचतोय तो RCC ओडिशा. इकडे मात्र एकापाठोपाठ एक गडी मात्र हजेरी लावतात. आणि जर विकेटबद्दल हिंदीमध्ये सांगायचं तर तू चल मैं आया, अशा पद्धतीचे विकेट्स मात्र एका पाठोपाठ एक जात आहेत. धावसंख्या फलकावर आहे ती आतापर्यंत 25 धावा आणि जवळजवळ हा सामना जिंकण्यासाठी आता हव्यात 18 चेंडूमध्ये जवळजवळ 56 धावांची गरज. 18 बॉल्स रिमेनिंग and 56 रन्स रिक्वायर्ड टू विन द मैच. अब औसत को देखा जाए तो लगभग 18 के ऊपर, और 18 के ऊपर जब औसत चला जाता है तो इक्के दुक्के से कुछ नहीं होता है. फिर आपको हवाई सफ़र कराना होगा गेंद को. अब विजय पावले को लाया जा रहा है, जिनकी रफ्तार की तारीफ की जाती है, काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करने प्रसिद्ध है ऐसे गेंदबाज विजय पावले. ओहो, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम याद दिलाते हुए विजय पावले को, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन. जितना तेज आप डालोगे, और अंपायर के संकेत नो बॉल. और डोंट, अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन. प्लीज डोंट आर्ग्यूमेंट, प्लीज. नो बॉल इज नो बॉल, प्लीज. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, प्लीज. ऑर्गेनाइजर से आपको निवेदन है, प्लीज नो आर्ग्यूमेंट, प्लीज प्लीज. 49 रन्स रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स. 32 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे, और ये फ्री हिट है. 49 रन्स रिक्वायर्ड, 18 गेंदों में 49 रन. अब औसत लगभग 16 के आसपास, और ये मैच काफ़ी रोमांचकारी होता हुआ, दर्शकों के दिलों को छू जाने वाला ये मैच, क्योंकि धीरज 11 वर्सेस RCC उड़ीसा के बीच चलता हुआ ये प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी वो सीधा क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी. तो गेंदबाज विजय पावले फिर से राइट आर्म राउंड विकेट. इस बार बल्लेबाज तरुण इंद्रा के लिए अगली गेंद. ये फ्री हिट का मौका है, तो देखना इस फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे.
इस बार अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, ब्लॉक हॉल में गेंद, 1 रन मिलेगा जब तक जिग्नेश पटेल गेंद को उठाए। इंदिरा ने 1 रन को चुराया और इसी 1 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 33 और अभी भी 48 रन चाहिए। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज जो अभी अभी आए हैं मैदान पे, विजय, देखना अपने टीम को विजय तक ले जाएंगे, उनके नाम में विजय है और अपनी टीम को भी विजय तक ले जाना होगा। बाया और दाइना जब ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हो तो जो कैप्टन के लिए काफ़ी यहाँ पे मैं कहूँगा कि मुसीबत बढ़ जाती है। हर बार फील्डिंग को चेंज करना पड़ता है और ये देखिए आप देख रहे हो कि हर बार फील्डिंग को चेंज किया जा रहा है। तो तरुण के लिए अगली गेंद आप पीछे, विजय, इस बार अच्छी गेंद, देखिए इस बार ये गेंद बाहर निकल दी, वाइट बॉल। बाहर से ना खुश होते हुए विजय पावले, 1 रन जरूर मिलेगा, 34 ऑन बोर्ड। ये भी आवाज़ निकालने में सक्षम है और ये आवाज़ निकालते हैं जब गेंद डिलीवर होती है। हमने हमेशा देखा है, हमने सुबह देखा था विश्वजीत ठाकुर मोटिया को, अब आप देख रहे हो विजय पावले को। अब तक का स्कोर बोर्ड पे लगे 34, 34 रन। और कुछ यहाँ से एक अच्छा मैसेज छोड़ते हुए योगेश पेनकर कि अपने दिमाग को ठंडा रखो, अंपायर तो उनका काम बखूबी निभा रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, 1 ही रन मिलेगा, क्या दूसरे की कोशिश नहीं, 1 रन पे ही संतुष्ट। स्कोर जा पहुंचा है अब 35 रन। अभी भी 46 रनों की लगभग ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदों की बात की जाए तो गेंदें इस ओवर में अब तक हुई है सिर्फ 3 बॉल हो चुके हैं, 2 बॉल हो चुके हैं और अभी भी 4 गेंदें आनी शेष है। तो 4 गेंदें इस ओवर की अभी भी आनी शेष है। तो देखना है हमारे साथ हमारे सभी के चहीते टेनिस क्रिकेट इन डॉट के सीईओ संतोष जी नानेकर मैच का आप तक जो स्कोर डिजिटल स्कोर आप तक पहुंचाने हैं और हमारे कैमरामैन गौरव सावंत भी अपना काम बखूबी निभाते हुए। विजय, ओहो, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किया, बहुत ही बढ़िया गेंद। बल्लेबाज जब तक इंदिरा गेंद को समझ पाते, कोई गलती नहीं की, कीपर पंकज यादव ने, माटिया ने गेंद को गैदर कर लिया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। ये डॉट बॉल हर बार प्रेशर बढ़ाती है। 15 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी है। 3 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है, यानी टोटल 15 गेंदों का खेल आना बाकी है। और अब तक का स्कोर देखा जाए तो 35, यानी 15 गेंदों में चाहिए अब 46 रन, यानी हर गेंद पे 3 रन चाहिए अब। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, गति परिवर्तन है ये। 14 गेंदों में चाहिए 46 रन, 14 बॉल्स रिमेनिंग, 46 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। आरसीसी उड़ीसा के लिए अब डॉट गेंदे ये एक मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि डॉट गेंदे जितनी करेंगे उतना जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आसमान को छुएगा, क्योंकि अब तक का जो रन रेट है वो लगभग 18 के आसपास जा पहुंचा है। इस बार खुद तो गिरे लेकिन गेंद को भी पहुंचा दिया, 4 रन, लाजवाब स्ट्रोक, जैसे कोहली के रफ्तार से निकलती हुई गेंद, 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। वहां पे खड़े हुए संदेश को सिर्फ दर्शक की भूमिका को निभाना पड़ा और ये 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 4 रन के साथ स्कोर यहाँ पे जा पहुंचा है 39 और अभी भी 42 रन चाहिए, 42 रन रिक्वायर्ड, 13 बॉल्स रिमेनिंग, 13 गेंदे और 42 रन, 13 गेंदों में 42 रन। और ये गेंद अंपायर के संकेत, नो बॉल, और ये क्या दौड़ लगाएंगे या नहीं, लगा दी और ये 2 रन मिलेंगे। तो अब चाहिए 39 और ये फ्री हिट, तो स्कोर बोर्ड 41 ऑन बोर्ड, यानी अभी भी 40 रनों की जरूरत। 13 गेंदे, 40 रन, फ्री हिट और
यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, इसीलिए फील्डिंग को वो सजा सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि फ्री हिट पे अगर उसी बल्लेबाज ने गेंद को खेला है तो फिर फील्डिंग को बदला नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज बदल चुके हैं, इसी कारण फील्डिंग को सजाया जा रहा है। अब 13 गेंदे 40 रन। विजय, अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन, दूसरे की कोई कोशिश नहीं। अब स्कोर जा पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। तो अभी आने वाली 12 गेंदों में चाहिए 39 रन, और औसत देखा जाए तो 19.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। अब कमेंट्री बॉक्स में आज के दिन में इतनी ही आपकी सेवा, और अब लोगों का विश्राम। कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन चलेंगे अंग्रेजी कमेंटेटर, हमारे साथी कमेंटेटर तुषार नाइक के पास, और सुनेंगे आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में। धन्यवाद। Thank you, Chirag Meher. Another 39 runs required from 12 deliveries. So 19.5 runs per over is what is the required target for Orissa to move into the quarterfinals. They have to go right, bang bang from the first ball of this over. They will be eyeing for a total of at least 15 runs in the final over. (15 to 20 runs in the final over. Tarun, the batsman on strike. Sandesh, the bowler. First ball, top edge is landing in no man land. 18. Another 38 runs required now from 11 balls. 11 balls, 38 runs, 6 sixes can do it. At least 3 hits can bring the match more closer. Will this match go till the wire? (38 from 11). Oh, beaten by the pace. Dot ball. Make it 38 from 10. 6 out of these 10 deliveries need to be dispatched for maximum. Pressure on the batting team. In the driver's seat, Dheeraj 11. Again beaten. Landing the ball in short of good length. Very difficult for the batsman to have a go at it. So 2 back-to-back dot balls. Pressure right back on Orissa. In fact, the pressure creeping. Another dot ball, boy. He's rolling the arm to perfection. Another walk-in park situation for the Dheeraj 11. This time dropping in short, top edge is the ball. It took ages for the ball to come down, and the fielder couldn't latch on to the catch. What could have been a wicket has been ended in a single run. So this time change in strike. The match seems to be moving out of the hands of Orissa. Last ball of the over. Another swing and a miss. This time clean the bails by Mathia. Another wicket for the bowler. The people, those who are present out here, just keep as a reminder, tomorrow will be the quarterfinals. So you need to be present out here to watch all the cracker of matches. Total of 8 teams will be participating tomorrow. 2 from All India and 2 from our own Goa.
and the remaining from our own Goa. So total of 8 teams will be clashing against each other. So the teams, those who will be going back home, will have the name of Orissa along with Chennai. Chennai have already packed their bags to book the train, and it's time for Orissa now to pack their bags, because it's Dheeraj 11 who are sitting comfortable. Final over. The chemical engineer mastering his resources, stopping the bowler from his follow-up. 6 balls, 37 needed. And the pace attack. Vijay Balai this time outside the off stump. White signal by the umpire. So make it 36 from 6. Is there any Yuvraj Singh in the team of Orissa? For that, the bowler need to be Stuart Broad. Can this be a Yuvraj Singh Stuart Broad show? This time, wrapped on the pads. Leg by signal by the umpire. So 35 required more from 5 balls. It was a walk-in park situation for the Dheeraj team throughout the day. Another attempt of a catch, gone bagging, but saving a boundary. Nevertheless, certainly for sure we have seen a good fielding performance throughout the day. Some catches gone bagging, but brilliant saves on the boundary. Another timely shot, but falling just short of the fielder on the cover boundary region. Another single. So fabulous job done by tenniscricket.in, telecasting the match live on YouTube. Another dot ball. Gaurav Sawant, the cameraman, along with the CEO Santosh Nanekar, CEO of tenniscricket.in, bringing you this match is live on YouTube. Another wide. So some extras to reduce the target. But not to forget, tomorrow will be the quarter-final matches. Will this be the catch? Yes, it is. Safely ledged by Jignesh. Next batsman walking in. Tarun is the new batsman. The faces seems to be pulled down. No smiling faces. For Orissa. And no pressure can be seen on the batting team. Fielding team this time, it's straight to the third man region fielder. So dot ball to finish off the match. A comprehensive victory for Dheeraj 11. Thanking each and every people present out here. The cameraman, the